Good morning and Assalamu alaikum. Thank you for taking the time to come here and join us today. I am so delighted to welcome you all here in this closing ceremony of the inaugural experiential learning program, Learning Without Borders, the Baltistan Experience. And this is a moment that we have been waiting for the past 9 months. And the journey has been so long, but I'm glad that we are here today. My name is Hataf Ayub, and I am the co-lead for the project from the LUMS side, and my co-host is Dr. Ishtaq Hussain. He is the focal person from UOB side. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच हतब। आज एक खुशी का दिन भी है, साथ साथ मुहर्रम भी है, लेकिन आप लोगों ने जो कोर्स तकरीबन इन्होंने और द 9 मंथ्स बताया, इसकी प्रिपरेशन से लेकर अब तक आज इस पूरे कोर्स की जो है ना क्लोजिंग सेरेमनी है, तो इस सेशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होता है। May I request Mr. Kumail, student of UPS, to come here for recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. Thank you, Kumail. The Baltistan experience has been like no other. All the challenges and all the difficulties have been so unprecedented, but so have been the learning outcomes, and not to mention all the fun parts. For example, 20-kilometer plus walk to Upper Kachura and back, and then walking on a threadbare trek to the fort and to the organic village. Through all these experiences, all of us have pushed each other a little bit, and maybe that was one of the main ideas behind the project, and that was to come out of our comfort zones, to push ourselves, to learn through experiences, and to prepare ourselves for a wider community impact. Personally speaking, I have learned so much from this project, and this project has been enlightening for my own growth. I have realized that with enough courage, with enough support, and with enough hope and positivity, you can persevere in all kinds of difficult environments. You have been facing a lot of difficulties since day one. For example, you go to the washroom and you want to
and you want to get ready for the class, आप वॉशरूम में जाते हैं, पानी आ रहा है, आप फेस वॉश लगाते हैं, पानी नहीं आ रहा. And this has happened multiple times to multiple students. You go to a very beautiful place, you take a very nice photo, and you want to share that photo with your friends, family, and somebody else, but then you don't have internet, and you can't have Insta stories. उसके अलावा you're having a very tough day, or you go to व्यवसाय, सारा दिन आपने पढ़ाई की है, बायो वाले खास तौर पे. You come home, you try to sleep, but then you have to share the space with 6 more people. और किसी का हाथ किसी के मुंह पे जा रहा है, किसी की लात कहाँ जा रही है. So we have seen that, and we acknowledge that. और बेड बग्स की बात मैं नहीं करूँगा because this is not मुनासिब यहाँ पे. So करने की बातें बहुत सारी हैं, but I want to express a very sincere gratitude to the staff, to the students, to the faculty of both UOBS and LUMS that they have persevered, they have made sure to make this project a success despite all the difficulties, especially students, and I've just shared all the stories. Similarly, the students of UOBS, they have been so open, so heartwarming, so forthcoming, and they have opened their hearts for our LUMS students and our faculty and staff. They have been so eager to share their tradition, their culture, their language, their poetry, their cuisine, their food, and all these things. बातें करने को बहुत सारी हैं, and I think it's enough of my words. So I would like to show all these experiences in a form of video. So Ali, could you play the video, please? When it comes to innovation and education, we can think of 3 unique dimensions where innovation and experimentation is possible: curriculum, pedagogy, and learning environments. In simple words, what we teach, how we teach, and where we teach. The Learning Without Borders, the Baltistan experience, is an excellent example where we try to innovate across all 3 dimensions. We experimented with different forms of pedagogy and curriculum. More importantly, this region served as an experimental and specialized learning environment. There was a collaborative design process behind this one-of-its-kind Learning Without Borders venture. It all started last year when LUMS faculty and management visited Skardu and interacted with local collaborators at the University of Baltistan and teaching members. The team identified opportunities in the area of water management, green energy, biodiversity, climate change, tourism, and entrepreneurship. The LUMS team worked on the conceptual model of this collaboration and visited Skardu again to formalize this collaboration. We signed MOUs, strengthened our relationship with the local community, made plans for delivering an experiential summer school in Skardu. LUMS team also invited the University of Baltistan's faculty to LUMS, and that is when we organized a 5-day-long course design express. Doing multiple co-creation sessions, we converted opportunity areas into tangible courses, worked on course outlines, and designed the whole structure for the summer school. This collaborative co-creation activity helped us to innovate all 3 ends: the curriculum, the pedagogy, and the use of learning environments. So it's 11th July, all the time has come. We have 4 buses. Students are here. We are packing their stuff. And the idea and the plan is to take off. And we do take off. I kept telling students that this is going to be unprecedented that we have seen. और जो जवान खूबसूरती या कहीं मैंने देखी नहीं होगी, they were like, सर आप क्या कह रहे हैं? And I kept saying it's a raw beauty, and they were like, what is raw beauty? And when we finally moved towards the road and when they saw the mountains, and then they were like, oh sir, I don't know the better word than raw.
लेकिन ये जगह भी प्यारी है, लेकिन ये रॉ है। जैसे पहाड़ अगर आप देखें तो बिल्कुल सफेद है, कोई दर्द वगैरह नहीं लगा, लेकिन फिर भी देखने का दिल कर रहा है। इंग्लिश का लफ्ज होता है मैजेस्टिक, वो पूरा फिट हो रहा है। यहाँ आके मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल पाया और it was so welcoming, बहुत मेहमान नवाज थे, and I'm looking forward to this experience to be experimental and educational. I was given a blueprint by the management to transform this concept into a real life model. A wonderful experiential learning program where 70% of the learning happened on the field, and to manage expectations of 350 people on a daily basis was quite challenging as well as a learning experience for me. For the future, the program has a lot of potential to be scaled up by inviting other stakeholders, local and international institutions to immerse, interact, and impact for collaborative learning. And this is heaven to यहाँ पे लम्स क्वालिटी या जो हम लोग इन चीज़ों का ख्याल करते हैं, इन बच्चों को ज़रूरत है। ये बच्चे पैशनेट बड़े हैं, एनर्जेटिक हैं, ये वाकई सीखना चाहते हैं। तो हमारे लिए तो एक आपकी तकलीफ थी कि लम्स अपनी दीवारों से बाहर निकल रहा है और निकल के भी वहाँ आ रहा है जहाँ पे कोई जाने का कभी नहीं सोचता। For me, the highlight or the most important thing in this course is to listen to the students, उनकी जो learning है, जो opportunities they get to learn, the opportunities they get to do experiments in the lab that would otherwise not be possible. वो मेरे लिए बड़ी important है। सिर्फ स्टूडेंट से नहीं बल्कि टीचर के साथ वो उसके देना अब आजकल का स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड होता जा रहा है, तो बच्चों में बड़ा इंटरेस्ट मैंने देखा। और अभी मैं पिछले दिन हुई 2 दिन पहले मैंने बच्चों से थोड़ा सा पूछा कि कैसे लग रहा है, तो कह रहे हैं कि अभी तो हमें थोड़ी उदासी और परेशानी सी है। तो आई वाज सरप्राइज कि क्यों आप तो इतने, वो कह रहे थे कि हमें अब मजा आना शुरू हो गया और हम घुल मिल गए, अब जाने की बात है। मुझे 2 चीजें पसंद है, बहुत बेहतर, the best of both the worlds in that sense. And this course is built around the main project, which is an entrepreneurial project in which I give people money to start a business. स्टूडेंट्स के बिहाफ पे जो है मैं ये कहूँगा कि यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट डाउन जाते हैं, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि एक डाइवर्स माहौल मिला और लम्स जैसे इंस्टीट्यूट के साथ उनके जो है स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन। एंड व्हेन आई गॉट टू नो दैट देयर वुड बी which is really at the heart of what we do, that we are studying. When we immediately got interested into it, we thought about the course, which we called as water management. And what we thought was that there would be no better way to teach this course for the students than by using this setting as a living lab. ऐसे एरियाज में लगे जहाँ पे रिवर इरोजन इश्यूज है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो उस साइड में विजिट करवाया। वाटर क्वालिटी के इश्यूज है यहाँ पे, वाटर बोर्न डिजीज के इश्यूज है यहाँ पे, ग्लेशियरिक रीजन है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर ज़्यादा रेपिडली मेल्ट हो रहा है। उन्हीं मेल्टिंग की वजह से यहाँ पे फ्लड के जो है ऐसे कम्युनिटीज हैं जो वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वहाँ पे उन लोगों ने विजिट किया और ज़्यादा उन लोगों को आइडिया था। So I wanted to join this program so having students from 2 different universities studying simultaneously and together, so that was something that interested me. The highlight of the experience would be, seeing the 2 groups of students gelling together and working together, because students have not only learned from us, the faculty, they've also learned a lot from each other. So you've got some of these students who have their own businesses, so they were able to give practical knowledge to our students, and our students have greater exposure and technical expertise, so they were able to share that with the local students. In addition to the understanding that they developed for their own knowledge and learning, they would also document what they have found, and this would set the foundation of a baseline information gathering, a baseline solution design, some futuristic plans of how viable business in developing an energy microeconomy might come about in this area of Baltistan. इससे ये सीखा कि मतलब किसी भी जगह, कोई भी जगह बेकार नहीं है, हम उस चीज को मतलब प्रोमिनेंटली मतलब उसको बहुत तरीके से यूज
most memorable part of this experience was that I didn't come with any of my friends. So I was a loner. But when I came here, I made Baltistan friends and friends from LUMS from different majors. I have learned a lot of things. The Balti students, the Balti people, they are very welcoming. And what I have learned is when you have limited resources around you, you should expand your limitations personally and professionally both. जिस तरह हमारी क्लासेस होती है उससे तो मतलब काफी डिफरेंट एक एक्सपीरियंस था ये, इनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं, हम डेली यही चीजें देख रहे हैं, लेकिन जो लम्स के स्टूडेंट जो वहां से आए थे उनको ये चीजें देखे उनके पास नई नई आइडियाज आ रही थी. I graduated from LUMS in 2018 and I graduated in Econ Call. I just want to live in the mountains for 1 month. I need to do this course. And then I saw entrepreneurship and it's something that I really want to do with my own business and all of that. So then I was like, I should go for this. I was not expecting it to be this interactive. I said it to every single person that you should just go for it. It's a leap of faith and you should just go for it because it helps so much. Like it's such an eye-opening growth experience for every single person. Like you get to learn so much about yourself, about about the cultures within Pakistan, how people are living. You learn to adapt to difficult situations, all of that. So I think if you have time, everybody should just go for it. Thank you, Elise. These are the guys. Thank you. Both come down.
लेकिन लोगों ने मेरे रॉ पार्ट्स निकाल दिए तो thank you, Elise. So next I would like to invite somebody who has been part of this program since day one, and without him we could not have moved even for an inch, and his name is Dr. Ishaq Sam. So can you come and share your remarks, please? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Honorable guest, Honorable Vice Chancellor, notables from Baltistan, faculty from Baltistan and LUMS, and all students from University of Baltistan and LUMS. Assalamu alaikum. आज बहुत खुशी हो रही है और चूँकि आप जैसे हतब साहब ने बताया ये 30 डेज़ का जो कोर्स है इसकी जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है, इससे आगे इंशाल्लाह और भी जिस तरह जैसे कहते हैं सितारों से जहाँ और भी हैं. जो लम्स का एक्सपीरियंस बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ और जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है द एक्सपीरियंस फ्रॉम बल्तिस्तान, आप सब ने इंक्लूडिंग गेस्ट पोस्टर्स देखे, पोस्ट कार्ड्स देखे. They have reflected their ideas, their experience while working in lab, while working in class, while visiting the field for other subjects. तो बहुत ही यानी चूँकि इनके प्रोजेक्ट्स भी देखे हमने, कुछ प्रोजेक्ट में भी पार्टिसिपेट किया, कुछ साथ साथ कनेक्टिंग सेमिनार्स भी हुए. तो जो कंटेंट के मुताबिक तमाम कोर्सेस में उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव किए और मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि इन तमाम ने इतने चैलेंजेस एंड गर्मी, बारिश, पानी का ना होना और बहुत सारी चीज़ें, तो बावजूद उसके दे हैव अचीव्ड देयर टारगेट्स. एंड टुडे द डे इज़ फॉर ग्रेजुएशन. आप लोगों के दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं रहूँगा. अल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा. तो आप वो मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा बनें और आगे बढ़ें, कौम की खिदमत करें. मैं कंग्रेचुलेशन पेश करता हूँ लम्स एंड यूबीएस की तमाम फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांसमेंट टीम, यानी ईच एंड एवरी, होस्टिंग से लेकर ड्राइवर से लेकर स्टाफ से लेकर तमाम को मैं इंतहाई यानी कि दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये कोर्स सक्सेसफुल हुआ और आप सब ने अपनी मेहनत की. इसी मेहनत के फल आज आप ले रहे हैं. थैंक यू सो मच. Thank you, Ishaq Sahab. Now I want to invite somebody who has almost broken his back to teach you, and his name is Dr. Mohammad Tariq. To speak on behalf of the faculty. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद. एक माह कबल इस प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने एक फिक्रा बोला था जो उस वक़्त मुझे खुद भी बड़ा रस्मी सा लगा कि इल्म की खातिर हिजरत उसका हुक्म ही है और फ़र्ज़ भी है. लेकिन मेरे इंतहाई प्यारे तलबा व तालबात और इवन फैकल्टी, हम सब जो अपना घर बार छोड़ के स्कर्दू आए थे, अपने बड़े ही आरामदेह ज़िंदगी का तौर तरीका छोड़ के आए थे, मुझे पूरे वसूख से और यकीन से ये कहने में कोई याद नहीं है कि हम सब ने हिजरत का थोड़ा सा मतलब सीखा होगा और हम उसमें से गुजरे हैं क्योंकि हम तालीम के खातिर यहाँ पे आए थे. मैं तमाम तलबा तालबात को खराज तहसीन पेश करूँगा और आप सबकी हिम्मत, हौसले, मेहनत और लगन को यकीन से जाने कि मैं इंतहाई कदर की निगाह से देखता हूँ. ये सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं है, मैं यहाँ पूरी फैकल्टी की तरफ से ये बात कर रहा हूँ जो भी अल्फाज अदा कर रहा हूँ.
میں آپ سب کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہوں گا، ہم سب کی طرف سے، تمام اساتذہ کرام کی طرف سے، کہ آپ سب اپنی طرز کے دنیا کے اس انوکھے پروگرام کے پائنیئرنگ بیچ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ کی لیگیسی، آپ کے قدموں کے نشان آنے والے دنوں میں، اگلے سالوں میں یاد رکھے جائیں گے، اور آنے والے اسٹوڈنٹ اور اساتذہ انشاءاللہ تعالیٰ انہیں فالو کریں گے۔ یہ پروگرام کسی دیوانے کے خواب سے کم نہیں تھا۔ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے والے لوگ انہیں دیوانہ کہتے ہیں، اور یہی لوگ نئی راہیں اور منزلوں کا سراغ اور تلاش میں نئے نئے راستے دریافت کرتے ہیں۔ میں ایسے ہی ایک دیوانے کو، جسے ڈاکٹر محمد ارشد کے نام سے ہم جانتے ہیں، مبارکباد دوں گا اور خراج تحسین پیش کروں گا کہ ڈاکٹر ارشد نے اس پروگرام کی بنیاد رکھی، اور جیسے ہتف نے کہا کہ تقریباً لگ بھگ 9 ماہ پہلے ہم یہاں ایک ویل بینڈ کی طرح گھوم رہے تھے، اور روزانہ شام میں پوچھا جاتا تھا اینی آئیڈیا، اور یہ آئیڈیا، یہ خواب آپ کے سامنے آج۔ مجھے پچھلے 1 ماہ میں، صرف مجھے نہیں، میری پوری فیکلٹی کو ایک بات ڈاکٹر ارشد کی بار بار یاد آئی، اور وہ تھی کہ ہم سکھانے نہیں، خود سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس فکرے کا مفہوم پچھلے 1 ماہ میں ہم سب کو بار بار ہماری آنکھوں کے سامنے آیا، جب 5 مختلف کورسز میں ہر فیکلٹی نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہم نے ہر دن، ہر گھڑی کوئی نئی چیز سیکھی۔ ہم نے پڑھاتے ہوئے بھی نئی چیز سیکھی اپنے اسٹوڈنٹ سے، جو ہمارے UOBS کے اسٹوڈنٹ تھے، جب ہم ان کے ساتھ فیلڈ میں ہوتے تھے، جب ہم کلاس میں ہوتے تھے، ہمارے جو میزبان UOBS کی تمام انتظامیہ، اور پرٹیکولرلی جو ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہمارے ساتھ کو ٹیچ کیا، ان کے ساتھ ہمیں سیکھنے کا بہت موقع ملا۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے UOBS کے طلبہ و طالبات اور اساتذہ، ہم نے مل کے جو یہ ایک خواب بنے ہیں، یہ ایک نئے دور اور نئی ریسرچ کا موجب بنے گا، بلکہ اس کے بیج آپ لوگوں نے بو دی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پھل ہم سب اکٹھے ہارویسٹ کریں گے۔ ہم سب کا یہاں آنا صرف UOBS ایک یونیفائڈ تھیم تھا 9 ماہ پہلے، کہ ہم نے UOBS کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے نئے کورسز ٹیچ کرنے ہیں، اور ہم نے ایک نیا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، جو سلیمان نے ویڈیو میں پیراڈائم شفٹ یا پیڈاگوجی کی بات کی تھی۔ یہ فکرے بھی آج سے 9 ماہ پہلے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، لیکن 9 ماہ بعد آج یہاں کھڑے ہوئے، ہم 5 کورسز کے جو انسٹرکٹرز تھے یہاں کے اور LUMS کے، ہم سب نے اس کا اعتراف کیا کہ یہ نیا تجربہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ میں یہاں خاص طور پر اپنے لائف سائنسز کے کورس میں موجود تمام UOBS کے بچوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے آپ کو مدھانی کی طرح 3 ہفتوں میں بہت زیادہ گھمایا، لیکن اس میں آپ نے ہمیں لیڈ کیا۔ ہم گاؤں میں گئے، ہم پودوں کی کلیکشن میں، تو آپ بچوں نے ہمیں ہر جگہ پہ لیڈ کیا۔ اس میں ڈاکٹر اشتیاق احمد اور نسیم جو ٹیکسونومسٹ تھے، ان 2 بندوں کو زندگی بھر نہیں بھولوں گا، وہ اس کورس کو کامیاب کرنے میں ان کا بڑا رول ہے۔ جاتے جاتے میں یہ کہوں گا کہ یہ پروگرام جسے میں ایک خواب کہتا ہوں، وہ مکمل نہیں ہوا، آج ختم نہیں ہوا، آج آغاز ہوا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہمیں اس شراکت کو جاری رکھنا ہے، اور یہ ایوالو کرے گی۔ ہم بایولوجسٹ ایوولوشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں، یہ ٹرو ایوولوشن اس کی ہوگی۔ یہاں میں اپنے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تمام عملے، انتظامیہ کا بے حد مشکور ہوں
اور ان کے غیر مشروط اور ہر ممکن تعاون کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہمیں ان کے بغیر شاید اتنا مزہ نہ آتا کیونکہ وہ کیمپس بڑی حسین جگہ پہ تھا اور کلاس روم بڑی زبردست تھے. آخر میں خاص طور پر میں ڈاکٹر نعمان ظفر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور ذکر کروں گا. انہوں نے اپنے کورس کے ساتھ ساتھ گرین انرجی کے کورس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کا DHQ ہاسپٹل 2 دن لگا کے پورا اسٹڈی کیا اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کے تھرو آپ کے آپریشن تھیٹرز اور کچھ مشینیں بلا تعطل بجلی کی غیر موجودگی میں انشاءاللہ چلتے رہیں. نعمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں تمام کورسز کے TAs کا جتنے TAs ہمارے UOBS والی سائٹ سے تھے, ہماری لائف سائنسز والی LUMS والی سائٹ سے تھے, تمام کورسز کے TAs کا بے حد مشکور ہوں. فیکلٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ لوگوں کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا. یہ میں کوئی رسمی جملے ادا نہیں کر رہا, یہ اپنے دل کی ساری فیکلٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. جہاں بلتستان کے حسن نے ہمیں ہر وقت مسحور کیے رکھا تھا, وہیں کچھ تلخ سوالات جن کے جوابات ہمارے پاس نہیں تھے وہ بھی پوچھے جاتے تھے. یہاں کے پہاڑ بار بار ایک ہی سوال کرتے ہیں اور کرتے تھے کہ کیا تم 75 سالوں میں اتنا علم بھی حاصل نہیں کر سکے کہ تم ہمارا سینہ چاک کر کے ہمارے اندر گوہرے نایاب دریافت کر کے اس ملک کو اندھیروں سے اجالے میں لے کے آؤ. یہ ہمارا کام ہے, یہ آپ کا کام ہے. انہی پہاڑوں میں پھرتے یہ بھی سوال ہوتا تھا کہ کیا تم اس وادی کے وافر پانی کو 75 سالوں سے ضائع کرتے جاؤ گے یا سنبھال لو گے, اور اسکردو کی 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کیا ختم نہیں ہو سکتی. ان سوالات کے جواب گورنمنٹ نے نہیں دینے ہوتے, ان سوالات کے جواب یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ و طالبات نے دینے ہوتے. انشاءاللہ ان کے جوابات آئندہ آنے والے دنوں میں لازمی آئیں گے. اسی پروگرام سے انشاءاللہ تعالی گلستان, یہ جو آپ کا گلستان ہے, میں ہارٹیکلچرسٹ ہوں, میں پھولوں کا بھی ایکسپرٹ رہا ہوں کسی دور میں. آپ کے تو پھول 3 ماہ گلاب کے علاوہ مرجھا ہی نہیں رہا, مہینہ تو میں دیکھ رہا ہوں. میرے کہ مجھے یہاں بہت محنت کرنے والے بچے, اسٹوڈنٹس, اساتذہ جن حالات میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں, وہ میری امید ہے, ہم سب کی امید ہے, وہ اس ملک کی امید ہے. اور لمز نے کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا. لمز نے ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہوتے ہوئے, لمز کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ شاید وہاں درختوں پہ ڈالر لگتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں لمز ہر سال خسارے میں ہوتا ہے. لمز کی ایک ہی کمٹمنٹ ہے, کوالٹی کوالٹی کوالٹی, امپیکٹ 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 اور سوسائٹی. جتنا لمز کماتا ہے وہ اسٹوڈنٹس پہ لگا کے کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئلوں کو ہیرا بنانے کے سفر پہ ڈال دیں. جاتے جاتے میں کہوں گا کہ طلبہ و طالبات اور اساتذہ آپ سب کو مبارک ہو, کیونکہ میں اس پورے پروگرام کو پچھلے 9 سال سے دیکھ رہا تھا اور پچھلے 1 ماہ اس میں سے اپنے کولیگز کے ساتھ یہاں گزرا ہوں. یہ ڈیفینیٹلی یقیناً ایک نئے دن کا آغاز ہوا ہے اور آپ سب روشنی کی وجہ بنو گے. ہم ہیں چراغ آخری شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. جاتے جاتے 2 بندے جن کا قرض ہم سب پہ تا عمر رہے گا, اور آخر میں ذکر کرنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ میں ذرا کھل کے وقت لوں, اس لیے آپ برداشت کریں. عمر, برار اور حسن, ان 2 بندوں کا ہم سب پہ قرض رہے گا اس پروگرام کو نہ صرف کامیاب کرنے میں
اپنی بیونڈ دا کال آف دا ڈیوٹی رات 3 بجے آ کے جنریٹر آن کرنے میں اور 24 گھنٹے آپ کی طلبہ و طالبات کی اور فیکلٹی کی فائرنگ رینج میں رہنے کے. پانی نہیں آ رہا, انٹرنیٹ نہیں آ رہا, تو عمر ہم آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اور دوسرا میں آ رہا ہوں, اس پہ بھی آ رہا ہوں. اور دوسرا بندہ جو 9 ماہ سے ساتھ پہلے دن سے ہمارے ساتھ تھا اور جس نے انتہائی دل جمی سے 9 ماہ پہلے بھی ہمارے ساتھ تھا اور وہ چلتا گیا اور پچھلے 2 دن میں تو بخار میں بھی کام کرتا رہا, وہ ہے حتف ایوب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا, آخری الفاظ ہیں کہ نوسٹیلجیا ایک چیز ہوتی ہے جو جتنی بھی تکالیف میں سے ہم گزرے ہیں, ہم سب گزرے ہیں, تو یہ شعر اسے بڑا اچھا ایکسپلین کرتا ہے کہ محبت اب نہیں ہوگی, یہ کچھ دن بعد میں ہوگی. محبت اب نہیں ہوگی, یہ کچھ دن بعد میں ہوگی. گزر جائیں گے جب یہ دن, یہ ان کی یاد میں ہوگی. تھینک یو. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے محبت کی بات کی, روشنی اجالے کی بات کی, علم کی بات کی, پھول کے نہ مرجانے کی بات کی. واقعی میں اگر آپ ان ماؤنٹینس میں آ کے ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو آپ کو جہاں کہیں بھی جائیں تو لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ نظر آئے گی. آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ لوگ پتہ نہیں کن خوشی میں ہیں, لیکن وہ کتنے چیلنجز کے ساتھ گزر رہے ہیں وہ ان کے اندر ہے. اسی طرح اگر ریسورسز کی بات کر رہے ہیں, یہ دریا خاموشی سے گزر رہا ہے, یہ پہاڑ ہمارے اونچے اونچے ہیں, ان کے پیچھے بہت علم چھپا ہوا ہے. اور یہاں کے رہنے والے لوگ ماشاءاللہ سے جفاکش, محنت اور محب وطن پاکستانی, اور ساتھ ہی ساتھ مہمان نوازی کی اپنی مثال آپ رکھتے ہیں. میں محبت کے بارے میں زیادہ نہیں کہہ سکتا, اس میں زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے انفیکٹ, لیکن پھول کے مرجانے اور اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا, اس کا بھی سے کچھ تعلق ہے. یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے اگر آپ دیکھیں 3 مہینے جس طرح سر کہہ رہے ہیں کہ پھول کھلتے رہتے ہیں, اسی کی مشابہت سے اگر آپ دیکھیں لوگوں میں خوشی, چہرے پہ رونق, ان کی کئی وجوہات ہیں. ہمارے ہاں کلچرلی وہ اتنے کنیکٹڈ ہیں, آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے خود دیکھا ایز اے اسٹوڈنٹ, یہاں آئے ڈے 1 آپ ایک دوسرے کو نہیں جان رہے تھے, لیکن اب آپ بہت ہی کلوز ہو گئے ہیں اور آپ فیملی ممبر کی طرح ہیں. آپ نے سنا ہوگا 3 cups آف ٹی میں بھی یہی ایگزامپل ایک فارنر بتا رہا ہوتا ہے کہ پہلے چائے پہ وہ اجنبی ہوتے ہیں, دوسرے پہ وہ دوست بنتے ہیں, تیسرے کپ پہ وہ فیملی ممبر بنتے ہیں. آپ لوگوں نے 3 سے زیادہ کپ چائے پی لی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں ہر سیزن میں ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں. اسپرنگ سے لے کر سمر سے لے کر آٹم سے لے کر ونٹر, ہر سیزن میں ڈفرینٹ فیسٹیول اینڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. یہ بھی ہمارے بچوں نے یہاں سے سیکھا ہے. تو اگر آپ علم کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر طارق صاحب نے بہت ہی اچھا عطا کیا کہ علم کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. آپ سب مسلمان بہن بھائی سب علم کو حاصل کرنے آئے ہیں. چین تک جانا پڑے, چین کے قریب تک آپ پہنچ گئے, اس سے آگے بھی آپ جا سکتے ہیں. علم کے ان 3 درجوں میں جن کا ذکر ہوتا ہے, علم الیقین, عین الیقین اینڈ حق الیقین. آپ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ کچھ ہے گلگت بلتستان میں, بلتستان کی ماؤنٹینس میں کچھ ہے. آپ لوگوں نے سنا, پھر اس کے بعد دیکھا, مشاہدہ کیا, اور پھر حق الیقین کے درجے پہ آپ پہنچ گئے ہیں. آپ خود آبزرو کر رہے ہیں, آپ اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا رہے ہیں, پھول اٹھا رہے ہیں, پانی میں جا رہے ہیں, آپ انرجی کے تمام ریسورسز کو دیکھ رہے ہیں, پانی, گلیشیئر, پہاڑ, سب کچھ آپ یہاں کے آبزرو کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ماشاءاللہ بیکاز آف لمز اینڈ یونیورسٹی آف بلتستان آپ لوگوں کو لرننگ کا موقع ملا. اس لرننگ میں کورس ڈیزائن ایکسپریس میں ہم لوگ اس لاہور تک گئے, اور اس کورس ڈیزائن میں ہماری فیکلٹی, ٹیچر, ڈینز سب نے مل کے کام کیا. اب میں آپ کو آپ کے میں یہاں پہ انوائٹ کرنا چاہتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر عبد المتین صاحب, جو کہ ڈین ہیں
فیکلٹی آف نیچر اینڈ ہیلتھ سائنسز. اور اس پروگرام کی اس وقت کنوینئر ہیں ہمارے ڈاکٹر اشفاق صاحب. حج پہ گئے ہوئے ہیں اس وقت, بینگ سینئر موسٹ ہی از آلسو کنوینئر. اینڈ ہمارے ساتھ ٹیم میں 7 کورس ڈیزائن میں رہے. تو میں آئی ریکویسٹ پروفیسر ڈاکٹر عبد المجید صاحب ٹو شیئر ہز ویوز اینڈ ایکسپیرینس. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے تو جب یہ لاسٹ ایئر دسمبر جب یہ کورس کے لیے ہماری فیکلٹی گئی تھی, آئی واز پارٹ آف دیٹ ٹیم ٹو ڈیزائن دس کورس. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح بھی ڈاکٹر اشتیاق صاحب نے کہا کہ ہمارے دوسرے ڈین ہیں اشفاق صاحب, وہ حج پہ گئے تو پھر یہ مجھے ذمہ داری دے دی گئی. تو میں زیادہ ایڈمنسٹریشن میں انوالو رہا ہوں اور اس وجہ سے میں کورس پڑھانے میں انوالو نہیں ہو سکا, جس کے لیے اب میں سوچ رہا ہوں کہ آئی واز ان لکی ان دیٹ ریگارڈ. تو انشاءاللہ ان فیوچر, آج صبح بچی نے بھی ایک جو UOBS کی تھی اس نے بھی یہ گلہ کیا کہ آپ کو بھی ہونا چاہیے تھا, آپ کورس ڈیزائن میں تھے. لیکن انشاءاللہ ایز وی سیڈ دس جرنی از جسٹ اسٹارٹیڈ. تو انشاءاللہ آگے نیکسٹ جو مراحل ہوں گے انشاءاللہ اس میں وی ول پارٹیسپیٹ. سب سے پہلے تو میں پروفیسر ڈاکٹر ارشد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, اور جو ٹرسٹیز ہیں لمس کے, کہ they have chosen UOBS. There are so many other options. لیکن انہوں نے اس کو چوز کیا, اس کے لیے سر تھینک یو ویری مچ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہمارے وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم خان صاحب, اور ان کے ویژن, ان نے آپس میں مل کے ایک خواب دیکھا جو بھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ گئے ہیں کہ دیٹ واز فرسٹ ایکسپیریمنٹ ان دا کنٹری. اور میرے خیال سے جو آپ ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے تھے, جو آپ کے ہائی آفیشلس, اور جہاں تک چیلنجز کی بات ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے. تو ٹو بی آنیسٹ آئی واز سٹنگ ود پروفیسر ڈاکٹر ارشد اینڈ شاہد صاحب لائک آفٹر ڈیولپنگ دا کورس کہ یہ چیلنجز تو آپ کو آنے ہیں یہاں, وہ ہمیں پہلے پتا تھا. لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ دا سٹی یو آر لیونگ ان لاہور, یو ہیو ایوری تھنگ ایٹ یور ڈور اسٹیپ. ہر چیز آپ یو جسٹ سے اٹ, جسٹ نیم اٹ, یو گیٹ اٹ. لیکن جہاں بلتستان میں یو ہیو سین کہ یو ہیو دا کیپیٹل, یو ہیو دا منی, ایوری تھنگ, ایون یو ہیو ریسورسز, اس کے باوجود چیزوں میں آپ کو ملنے میں بہت دقت ہے, بہت پریشانی ہے. اینڈ دس از آئی تھنک دس از اندر لرننگ کہ آپ نے اس قسم کے انوائرمنٹ میں کیسے سروائیو کرنا ہے, کیسے پروڈکٹیو ہونا ہے. سب سے بڑی بات صرف رہنا نہیں, آپ نے پروڈکٹیو کیسے ہونا ہے. اور ابھی صبح میں جو دیکھ رہا تھا, جو پوسٹرز تھے اور کارڈز تھے, اور میں جو بھی جو ویڈیو دکھائی گئی ہے, تھینک یو ویری مچ لمس فار شوئنگ اس فرام یور ویو پوائنٹ کہ آپ نے اسکردو کو اپنی آنکھ سے دیکھا اور ہمیں دکھایا. ہم تو روز دیکھتے ہیں اسکردو میں یہی رہتے ہیں, لیکن دیٹ واز another way of looking at it. کیوں کہتے ہیں نا, جو جس بندے کے پاس جو چیز ہو نا اس کی قدر نہیں ہوتی. جس طرح ہمارے پاس پانی ہے, پہاڑ ہیں, یہاں کے ہربز ہیں, یہاں کے ٹریڈیشنز ہیں بہت زیادہ, لیکن ہم یہاں رہتے ہوئے ہم اس کو پریکٹس کر رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن شاید آج آپ لوگوں نے آ کے اس کو ریوائیو کیا ہے کہ کتنے بلیسڈ لوگ ہیں ہم, the people who are living in Baltistan. Of course challenges ہوتے ہیں, ان کو اوور کم بھی کیا جاتا ہے, اس کے لیے ریمیڈیز ڈیولپ کی جاتی ہیں. اب دوسری بات, کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ ابھی جو
मुकर्रीन यहाँ आए जिन्होंने बातें की, मैं उनके ही पॉइंट्स ले लेकर उनमें से मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि जो अभी बच्चों ने UOBS के बच्चे, of course this is not easy for them, 150 students to go to LUMS to get training or to have 1 month experience living and studying with you LUMS student. तो ये एक्सपीरियंस इन बच्चों को यहीं मिल गया और हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर व्हेन वी हैव आवर ओन बिल्डिंग, न्यू कैंपस, तो इंशाल्लाह उसमें हमारे हॉस्टल्स भी बन रहे हैं, एडमिन एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक्स भी बन रहे हैं इंशाल्लाह. तो होपफुली नेक्स्ट ईयर when you are planning to develop another advanced course, not this one, advanced, तो उसके लिए इंशाल्लाह आपको फैसिलिटीज इससे बेहतर मिलेंगी इंशाल्लाह. लेकिन ये जरूर है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों में से कोई लोग आए एंड दे विल मिस दिस एक्सपीरियंस, कि जो चैलेंजेस आपने यहाँ फेस किए हैं वो आपको उस वक्त कहेंगे हाँ उस वक्त ये चीज़ें थी, चैलेंजेस थे, लेकिन यू हैव लर्न अ लॉट, यू adopted new strategies to overcome those problems. अच्छा, आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि दोनों साइड से UOBS और LUMS, उनके हाई ऑफिशियल्स, वाइस चांसलर्स, then principal officers, dean आए हुए हैं, provost आए हुए हैं, then instructors, TAs from both sides, उन्होंने माशाल्लाह हर किस्म के चैलेंज होने के बावजूद उन्हें इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए दिन रात एक किए. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. और उसके बाद हमारे कोलैबोरेटर जो यहाँ थे, इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी, देन अदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, PCSIR और जितने भी लोग थे जो हमारे बच्चों को एंटरटेन करते रहे हैं, उनको लैब्स में लेके जाते रहे हैं, फील्ड विजिट करवाते रहे हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Sir Mateen. Looking forward to the new buildings, so that then you can look into the issues. Okay, so now I'm going to request somebody who has always given us reassurance. He has a vibe of reassurance. और कभी भी कोई मसला हो LUMS में, so we would always go to him, and he has already so much on his plate, but he would always listen to us and give advice. And his name is Dr. Tariq Itoon. He is the provost of LUMS. So I would request him to come and say the remarks. सफ़र वसीला है ज़फ़र. सफ़र करके इंसान बहुत कुछ सीखता है, and I'm sure that you've really learned a lot during this program. कहते हैं कि जी जब पानी मौजूद हो तो तयम्मुम नहीं किया जाता. Tariq has summarized all, and I won't want to say any more. Just say कि Tariq ideh, what, I forget the words. So give the same name, say Tariq. ठीक है, आज से कहानियाँ ही पै गया. So I would like to thank the faculty of UOBS, Allama Iqbal University for providing the campus, all the hard work done by Umar Barar, Hataf, all the staff from LUMS for trying to facilitate this. वो कहते हैं कि जी एक लेवल ऑफ कमराडरी होती है डे स्कॉलर्स की, एक होती है लेवल ऑफ कमराडरी बिटवीन हॉस्टलाइट्स, और एक होती है कमराडरी बिटवीन कैदियों की जो होती है. That's another level. So when you go through tough times together, that brings out the best in you, that brings out your true self, and I'm sure that you will look back at this experience with great, with treasured memories in this majestic environment. So thank you very much once again on behalf of LUMS.
माशाल्लाह सर, एवेक तो हम भी एवेक कर लेंगे। तो हमारे साथ एक शख्सियत यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप बल्कि स्टूडेंट्स के लिए यफ्तस है ज़रदमत नाराज़ी शासनियों। तो may I request Dr. Haji Kareem, he is controller of exams, University of Baltistan. यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के मैनेजमेंट की तरफ से डॉक्टर हजी करीम साहब यहाँ आएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। डॉक्टर हजी करीम, कंट्रोलर एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान स्कर्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अरशद अहमद साहब, वाइस चांसलर लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक जद्दून साहब, प्रोवोस्ट लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, और member of faculty members and staff members of LUMS and UOBS, Dean of Natural Sciences and Health Sciences UOBS, senior member, students from LUMS and UOBS, मेरे तमाम रफ़क़ाए कार और बल्तिस्तान के खूबसूरत चेहरे जनाब प्रोफेसर एमेरिटस यूसुफ हुसैन आबादी साहब, बल्तिस्तान के दीगर हमारे कलमकार दोस्त, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स, पोइट्स, अदीब और मेरे कोलीग शहजाद साहब, डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्कर्दू कैंपस, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स, वॉलंटियर्स, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफिस आपके सामने हाजिर हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शुक्रिया अदा करने, लेकिन आई एम श्योर कि आई वोंट बी एबल टू डू जस्टिस, क्योंकि मैं एक लर्न कोलीग के बिहाफ पे बात करना और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे बात करना अपने लिए बार गिरां समझता हूँ। अलबत्ता चंद अल्फाज, चंद चीज़ें गोश गुजार करके बैठ जाना चाहता हूँ, जिसमें दो मुबारकबादियाँ हैं। एक मुबारकबादी है जो जर्नी हमने शुरू किया था लास्ट नवंबर 2021 में। प्रोफेसर डॉक्टर अरशद अहमद साहब और उनकी टीम यहाँ आए थे, एक ख्वाब लेके आए थे और वो ख्वाब चलते चलते उसको मटेरियलाइज किया और आज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान स्कर्दू और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस मिल के एक छोटा सा स्टेप, एक माइलस्टोन हमने अचीव किया है। और मैं अपने कोलीग्स के साथ एग्री करूँगा कि ये कुली अचीवमेंट नहीं है, ये एक जर्नी है, यहाँ से आगाज़ है। हम उम्मीद है मिलके और भी बहुत सारे काम हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स और एडमिनिस्ट्रेशन मिलके काम करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ लम्स के लीडरशिप को, उनके ट्रस्टीज़ को, फैकल्टी मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को और यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान स्कर्दू के लीडरशिप को, एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी मेंबर्स और वो तमाम जो इसमें इंगेज रहे हैं। और दूसरी बात, हम आजकल ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का यौम आज़ादी मना रहे हैं, 75वां यौम आज़ादी। आज हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं और उसकी मुबारकबादी भी मैं देना चाहूँगा आप सबको। बहुत बहुत मुबारक। क्योंकि यहाँ आया हूँ तो दो तीन और बातें करूँगा। बदकिस्मती से कुछ अदर इंगेजमेंट की वजह से आई वाज आउट ऑफ द कैंपस। जब हमारे मोहतरम वाइस चांसलर लम्स से टीम के साथ आए उस वक्त भी मैं यहाँ मौजूद नहीं था। फिर हमारी टीम लम्स गए, उस वक्त भी मैं मौजूद नहीं था क्योंकि मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज थी। आई वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट 3 वीक्स विद हर इन इस्लामाबाद। और जो स्टोरीज मैंने सुना है इस प्रोग्राम के हवाले से अपने स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स से, और आज सुबह 8 बजे से जो मेरा इंगेजमेंट रहा है, उन सब की बुनियाद पे मैं इस नतीजे पे पहुंच रहा हूँ कि मेरा जो बिलीफ है अबाउट एजुकेशन एंड अबाउट द रोल ऑफ अ यूनिवर्सिटी,
तो वो बिलीफ शर्मिंदे ताबीर होता हुआ नजर आ रहा है। नंबर वन बिलीफ जो हमेशा से कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में ना स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, ना फैकल्टी पढ़ाने के लिए आते हैं, बल्कि हम सब सीखने के लिए आते हैं। जब हम सीखने के लिए आते हैं तो हम मिल के सीखते हैं। I along with my students we learn together, we explore the unseen world. ये हमारा काम है। तो ये इसी प्रोग्राम के तहत मुझे शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नजर आता है। दूसरा काम यूनिवर्सिटीज का ये है to engage the faculty members and the students in real life experiences and to explore the world, to discover it, to generate knowledge and disseminate it. ये खाली चारदीवारी के क्लासरूम में बैठ के नहीं हो सकता है। उसके लिए अपने कोकून से बाहर निकलना होता है, पहाड़ों में जाना होता है, सहराओं में जाना होता है। खाली क्लासरूम में जो रिवायती तरीके से हम पढ़ाते रहे हैं, दैट्स नॉट इनफ। और शायद इसी वजह से हम जो रिवायती तालीम दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, हम पीछे हैं बहुत सारे नेशंस की वजह से, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को वो नहीं दे पा रहे हैं जो देना चाहिए। हम उनको विजन नहीं दे सकते, हम उनको इंसाइट नहीं दे सकते, हम उनको इस काबिल नहीं बना सकते हैं कि वो खुद एक्सप्लोर करें। मेरा काम जग से पानी को गिलास में डालना नहीं है। My work as a faculty member is to unleash the inner potentials of the learners, to facilitate them, to enable them to dream and to get to their dreams. ये मेरा काम है और ये एक यूनिवर्सिटी का काम होना चाहिए। जो इस प्रोग्राम में मुझे नजर आ रहा है कि हमारे कोलीग्स ने खूबसूरत लाहौर को देख के, जब भी हम लाहौर में 1-2 दिन भी गुजारते हैं तो बड़े शान से कहते हैं, आए मैं लाहौर, लाहौर लाहौर है वगैरह। वहाँ से आए, इन पहाड़ों में आए हैं। और मुझे ये यकीन है आपने बहुत सोबतें झीले हैं, हॉस्टल में पानी की कमी की वजह से, बिजली के ना होने की वजह से, इंटरनेट की नाकाफ़ी सहूलियात की वजह से और इस पर्टिकुलर टेरियन की वजह से। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये हुआ है, यू हैव हैड द अपॉर्चुनिटीज टू पुट योरसेल्फ इनटू द अदर्स शूज़, कि यहाँ बल्तिस्तान के बच्चे, बल्तिस्तान के फैकल्टी मेंबर्स, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी किन मुश्किलात के बावजूद जो है हायर एजुकेशन के राह में गामजन है। तो आपको एक रियलाइजेशन करने का मौका मिला है। और आपको यूनिवर्सिटी का एक काम ये भी है कि टू इंगेज द स्टूडेंट एंड फैकल्टी मेंबर्स इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, इन क्रिटिकल थिंकिंग। वो रिवायती सोच वगैरह से नहीं होता। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो हमें अपने क्लासरूम को छोड़ के बाहर निकलना होता है। और ये इस प्रोग्राम की खूबी मैं समझता हूँ। आपको एक्सप्लोर करने का, डिस्कवर करने का, नई नई राहें दरियाफ्त करने का मौका मिला है। हॉर्टिकल्चर से लेके, एनर्जी रिसोर्सेज के से लेके, एग्रीकल्चर से लेके और बहुत सारी चीज़ें। और मुझे उम्मीद है कि ये एक बेस लाइन सर्वे होगा आप सबके लिए। उसकी बुनियाद पे हमारे बड़े अच्छे जॉइंट वेंचर्स होंगे, एक्सप्लोरेशंस होंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी रोबस्ट पब्लिकेशंस एज वेल। तो हमारे फैकल्टी और स्टूडेंट्स जो है पब्लिकेशन भी करेंगे, रिसर्च में इंगेज कर लेंगे, और ये हमारा काम है। तो मैं मुख्तसर करूँगा क्योंकि मैं जस्ट शुक्रिया अदा करने के लिए आया था कि मुझे खुशी है कि ये प्रोग्राम ये आगाज़ हुआ है, ये चिंगारी का आगाज़ हुआ है और आप लोग बल्तिस्तान आए हैं। यहाँ जितनी मुश्किलात हैं उन मुश्किलात से नबर्द आज़मा हो कि हम सीख रहे हैं, हम सीख सकते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर हशमत कमाल इल्हामी मरहूम, जिसको बदबख्त कोविड ने हमसे छीन लिया 2 साल पहले, उसने खूबसूरत अंदाज में कहा था, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ हैं, बीच में हम हैं, मिसाले गोहरे नायाब हम पत्थर में रहते हैं। वो गोहरे नायाब कौन है? आप हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे हाल, हमारे फ्यूचर हैं। एक उस्ताद का काम ये है कि वो इजाफी पत्थरों को हटा के उस गोहरे नायाब को बाहर निकाले। ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए, इस दुनिया के लिए और पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के लिए उसको करामत साबित करें। ये एक उस्ताद का काम होगा, ये एक यूनिवर्सिटी का काम होगा। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा कर लूँगा बार दीगर अपने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के
leadership, vice chancellor, provost, deans, head of departments, faculty member, students, volunteers, staff members, तमाम का आपका आना हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है. हमें जो खुशी हुई है मुमकिन है हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा सकते. मेरे कोलीग मतीन साहब ने जैसे कहा कि आपने चुना यूओबीएस को, हम उस पर फख्र करते हैं और ये हमारा फख्र जारी रहेगा. एक स्टेप आपने आगाज़ किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का. यूनिवर्सिटी ऑफ बाल्टिस्तान के वाइस चांसलर साहब के, एडमिनिस्ट्रेशन के, फैकल्टी मेंबर्स के, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के, डीन ऑफिस के, रजिस्ट्रार ऑफिस के, जिन्होंने जिस किसी भी कैपेसिटी में इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने में अपना तन मन धन कुर्बान किया है, हम उनको सलाम पेश करते हैं. आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये अच्छा काम मज़ीद बेहतर हो जाएगा. तो ख़ास तौर पे वो डिपार्टमेंट्स, वो असातिज़ा कराम, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स जो इस प्रोग्राम में डायरेक्टली इंगेज है, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ. मैं पाकिस्तान के अपने लर्न कोलीग्स को, अपने असातिज़ा कराम को, जिन और हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस के प्रिंसिपल साहिबान और साहिबात को काश मशकूर हूँ कि वो यहाँ आए, इस प्रोग्राम को सुना, हमें सुना. आपका आना हमारे लिए फ़र्हत है. मैं ख़ास तौर पे तज़किरा करूँगा कि जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमारे साथ दिए हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान रीजन के डायरेक्टर साहब और उनकी टीम. आपने पूरा काम जो है आपने संभाला हमारे मेहमानों को होस्ट करने के लिए और उनको फैसिलिटेट करने के लिए. और ख़ास तौर पे हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, PSIR है और दूसरे डिपार्टमेंट जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमारे साथ दिए हैं, हमारे नौनिहालों की तरबियत के लिए, तालीम के लिए, हम उनके बहुत बहुत मशकूर हैं. हम मीडिया के पर्सनल्स के मशकूर हैं, ख़ास तौर पर लोकल मीडिया के, यूनिवर्सिटी ऑफ बाल्टिस्तान के मीडिया के और लम्स के मीडिया के, जो यहाँ आए हैं, हमें सुना है. और थ्रू आउट द प्रोग्राम एक महीने में हर सुबह जब हम अखबार खोलते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ बाल्टिस्तान नाम की कोई खूबसूरत स्टोरी वहाँ नज़र आता है, दिन अच्छा लगता है. आप सबका, मीडिया की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया. और आज ख़ास तौर पे यहाँ के प्रोग्राम के कन्वीनियर और फोकल पर्सन और वॉलंटियर्स और इसी कैंपस के हमारे कैंपस एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर स्टाफ, हमारे IT की टीम जो हमेशा हमारे साथ रहे हैं और हमारे मीडिया की टीम, हम आपके बहुत बहुत मशकूर हैं. आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. गौहर ने आपकी बात हुई तो बात होगी गौहर के उस्ताद की. एंड ही समबडी हु केम एज a teacher but then he had to be the dean and then he had to be the problem solver. So I would like to invite Dr. Adnan Zahid to share his views. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. अपने ख्यालात में क्या एक्सप्रेस करूं, मेरे से पहले 8 लोग आए हैं, सारे काम के ख्यालात वो एक्सप्रेस कर चुके, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जो तारिक साहब के ख्याल थे ना, मेरे एग्जैक्टली वही थे. और हैरान कुन बात है, उन्हीं अल्फाज में भी थे. तो मैं चाहता हूँ कि वो क्रेडिट आप मुझे ज़रूर दें. अच्छा, मैं अपने बच्चों को ना पिवटिंग बहुत सिखाता हूँ, राइट. तो अब पिवट करना पड़ेगा. मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं. या तो वो इश्तियाक साहब ने जिस बात का जिक्र किया, उनको एक्सपीरियंस कम है, मुझे ज़्यादा है, या तो मैं उसके ऊपर गुफ्तगू कर लूँ, लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है. तो मैंने मुख्तसर सरी एक लिखी है, 4-5 लाइनें, और वो इसलिए क्योंकि VC साहब और मेरे ख्यालात भी बहुत मिलते हैं और उनके और मेरे अल्फाज भी मिलते हैं. अगर मैंने लंबी स्पीच दे दी तो वो क्या बोलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा हम बोल देते हैं. So, as Dean of Student Affairs, I want to take this opportunity to talk about students and remind myself and others to always have faith in them. This experience would not have been a success had you not looked beyond the challenges to look at the opportunities. With that in mind, you took complete advantage of this learning opportunity. Sun Tzu said, "When a student is ready, a teacher appears."
And the Baltistan experience was able to teach you because you were willing to learn. I also want to acknowledge the hospitality of the Balti students who have forged lifelong friendships with their peers. Thank you. To the LUMS students, I want to say we are proud of most of you here. Tum do nahi. Most of you. And because you conducted yourself like true ambassadors of our institute, many of you today are going back after discovering limitless stores of resilience, grit, and positive energy that was always part of you. You're all superheroes now. Go forth in the world and make an impact. Lots of love and duas. थैंक यू वेरी मच। आपके ख्यालात सर बहुत कॉमन हैं, सबके साथ मिलते हैं, तो और स्टूडेंट के साथ मिलते हैं, ये अच्छी बात है। डीन के लिए बड़ा ज़रूरी है, डीन वैसे के लिए। Okay, so now it's time to, so there is somebody from the UOBS side, Dr. Naeem Khan, the VC of UOBS, who has been the initiator of this project. And although he's not here with us, but and because of the net issues, we can't have him on Zoom, but he has sent his message that we want to play. It's a great honor and thrill for me that on behalf of the University of Pakistan, I'm here to say thank you to our partners, LUMS. Today is 13th of August, and from tonight we'll be celebrating National Day of Pakistan. And what a day to celebrate, because the 4-year-old University of Baltistan in Skardu has reached out to one of the leading universities of Pakistan, a 35 years old university, which is very well known all over the world. Today we are completing 1 month, full month of our activities in Baltistan. What a day today that we are completing 5 different courses, and these courses were unique in a way that LUMS and University of Baltistan, our faculty, they jointly conducted the research and the field visits and the experimentations. And the unique thing about this program was that we were able to complete these 5 courses only in 1 month. We started on 13th of July, and today on 13th of August, it's our completion day. And this reflects one of the most significant academic and research collaboration between our 2 universities. One university is a public sector, a newly established university, and one university is a private philanthropic university, which has created, names from Pakistan all over Europe and North America. So it was an honor for us to join hands with this collaboration with LUMS. My dear colleague, Professor Arshad Ahmed, was very, forward-thinking. He's a visionary person. He wanted to join hands, and we thought that we can showcase unique geography, unique glaciers, unique culture, unique environment of Deosai River Indus, the third pole, which is the third largest ice mass on Earth, that is in Baltistan. So we are the custodian of these global environmental icons, and today we feel that we have given the students, 150 students from LUMS and 150 students from University of Baltistan. They were paired together. माशाल्लाह से इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो जर्नी स्टार्ट हुआ, पहले भी बात हुई पूरे बायोलॉजिकल फिनोमेना के तहत 9 मंथ। तो अब हम बात करें ग्लोबल इश्यूज, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली, तो उसमें हमारे सबसे फ्रंट पर रहने वाले और इसके जो
कहें कि तख्लीक इस प्रोग्राम के बारे में की, चूँकि मैं ज़्यादा तवालत में नहीं जाऊँगा, लम्स के वाइस चांसलर जनाब अरशद साहब, इन्होंने डे वन से जो इसकी मेहनत की, एक अहम बात जो उन्होंने बताया कि हमने पाकिस्तान बनाना इसी स्टेज में आके बहुत सारों ने सुना होगा। इनमें से जो मेजर चैलेंजेस हैं, एनर्जी के क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान का भी यही है। जनरल असेंबली में हमारे गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्राइम मिनिस्टर ने क्लाइमेट चेंज को सबसे इम्पोर्टेंट इशू डिक्लेयर किया। गो कि हम कश्मीर के चैलेंज को हमेशा बात करते हैं, लेकिन एट दैट टाइम ही मेंशन्ड कि क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मेन इशू अराउंड द ग्लोब, और पाकिस्तान ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि हम पूरी दुनिया में फ्रंट पर जाएं। 10 मिलियन सुनामी ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम कहें या उसके जो है ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट यहाँ गिलगित बल्तिस्तान तक, और मैं आपको बताऊं कि गिलगित बल्तिस्तान वाज वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स दैट। तो इन्हीं क्लाइमेट चेंज और चैलेंजेस को देखते हुए जो वाटर साइंस, वाटर मैनेजमेंट एंड बायोलॉजी के सब्जेक्ट एंड ग्रीन एनर्जी, ये तमाम चीज़ें उन्हीं एरियाज़ को टच करती हैं। ऑल द वे फ्रॉम कनाडा ही रीच हियर। इनकी कमिटमेंट फ्रॉम डे वन से आज तक यही रही। तमाम छोटे मोटे से बड़े मामला हर चीज़ में वो आगे आगे रहे। कोर्स डिज़ाइन में देखें उनका जो उसे कहें कि कमिटमेंट, वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। मे आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अरशद, वाइस चांसलर लम्स, कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार भी करें। और इससे आगे सर मैं ख्याल में अपने स्पीच के बाद आप आगे कैरी कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर, प्लीज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Greetings to you. Thank you so much for everything that you've done. I would agree with Dr. Adnan that everything that has to be said, all the congratulations and thanks, so coming from the heart, have been said. And so I will only echo my thanks and appreciation for everything that many people have so eloquently described in the journey that began a long time ago. तारिक साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये ख्वाब था, लेकिन ख्वाब की बहुत सी जड़ होती हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। It's a personal story, but it relates very much to where we are today and inshallah where we will go tomorrow. So 2006 May I had my first cup of tea. जो आप 3 cups का बता रहे थे, that was actually a bestseller book where these 2 authors talked about not only Gilgit-Baltistan but also Afghanistan and all of Pakistan. The experience that these authors had, one of them wanted to go to K2, and they wanted to go to K2 because in memory of his sister. And his famous line, as you said, was that when you have your first cup of tea with a balti, then you are a stranger. But your second cup, you become an honored guest. And then when you've had your third cup of tea, you are a family member. So I had my first cup of tea in 2006 when I came here with my family. And I learned some things very quickly. For example, Baltis have a very different sense of time and space. So if you ask them, मुझे उधर जाना है, तो कहते हैं हाँ आप चले जाएं, आप पहुंच जाएंगे, तो कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ा टाइम लगेगा, बेफिक्र रहें आप। Usually 15-20 मिनट। तो हमें तो सिर्फ ये एहसास हुआ कि सुबह कब है, दोपहर कब है और शाम कब है, बाकी सब भूल जाएं आप। जो भी प्लान्स थे हमारे, वो प्लान्स हमने पीछे छोड़े और फिर लोगों से
जो हमने दूसरी कप चाय पी और तीसरी कप चाय पी, हमें पता लग गया कि ये एक ऐसी मुख्तलिफ जगह है जहाँ पर हमें उस तरह की बुनियाद बन गई है कि हम चाहे चाहें या नहीं चाहें वापस ज़रूर आएंगे। और इसी तरह डॉक्टर नईम एक दिन अचानक से, usually we have schedules and protocols when vice chancellors meet, but Dr. Naeem, who has spent some time in Canada and I've also spent some time, took the liberty and just knocked on my door where I live, and he introduced himself, and I knew him, of course. I had seen him on many occasions. And he said, Dekhe, I don't think you know enough about Skardu, although I've heard that you've been there. And he has a way of explaining things about Skardu that he said, I'll only take 5 minutes, but again, it took a little bit longer. But we were enthralled. I think Anand, you may have been in that room. Oh, you weren't. Okay, but there were a number of other colleagues who were in the room, and we listened to him enthralled. I, of course, remembered my experiences with my family. And, having engineered partly some experiential learning programs in the 40 years I've spent in Canada, I thought that why can't we do something much better than what Canadians have done, or in fact what anyone in the world has done. And it would only work if we partner with a university that would teach us the kinds of things that we need to learn if you are going to be in this natural environment that you are blessed with in Gilgit-Baltistan. So we started dreaming about this. And the few thoughts that I had were amplified by the many faculty members that I met. From our own university, we decided we will go on an expedition, and we did. We came here, 9 months ago. And one thing led to another, until to the point where we started thinking that this is going to be not just only a world-class experiential learning program where we are going to build a foundation for many, many more iterations of the program that will go beyond just the 2 universities and in fact involve and engage other organizations. And as you see here with the esteemed faculty and administration of the University of Baltistan, I have been very fortunate, whether it has been Mateen Saab, who I have spent a lot of time with, or Zahir Hussain, Zakir Saab, Ishtiaq Saab has always been the anchor. And whenever we've had a problem, he's always found a way to navigate through that problem in the most gentle and diplomatic way. We've learned a lot from him, as we have from Jatoi Saab and from, of course, you heard from Haji Karim Khan Saab. We learned a lot from you just now. You have given us so many insights about learning, deep learning. And I think the most memorable time that stands out for me, that beyond the conversations, beyond the kind of heartfelt openness that we could display to each other without any reservations, we could say whatever we wanted to, whether that had to do with a challenge or an opportunity, it did not matter. It was through a lecture, a history lecture, that we received from both Ehsan Danish Saab and Yusuf Hasnabadi Saab. This was one of the most remarkable afternoons that some of us had the privilege of listening to and in fact admiring, and I hope you've all had a chance to go to the museum and seen the history and artifacts that are a treasure waiting to be explored and built upon, just as you have built your own treasure house, which we had a chance to see through your posters and through your postcards. I have to say that you must be feeling bittersweet emotions today about all the challenges that have been spoken of, where perhaps in the beginning you wanted to leave, but at this point maybe you're not so sure if it's time to go.
There must be a lot of friendships, fellowships, and trust and bonding that took place, where now it's a time to say, as they say in French, adieu rather than goodbye until we meet again. But you are a special group because you are the first cohort. And don't forget that the first cohort of any program that wants to continue forever is a very special cohort. That cohort builds the foundation. बुनियादी तौर पे उनकी जो insights होती हैं, वो दूसरे लोग जीरो से शुरू नहीं करते हैं, वो फिर बिल्ड करते हैं जो आप लोगों ने हम लोगों को सिखाया है, और इसी तरह जो फैकल्टी ने आपसे सीखा है, इस तरह आपने फैकल्टी से सीखा है, ये एक मॉडल है जिसमें I think we start to think about democratizing education so that we learn to listen to other views. Even if we disagree with them, even if we don't understand them, we have to learn to listen to them. And we listen to that view with confidence and with humility and with respect, which is, I think, something I'm sure all of you experienced in your time here in the last month. I will just leave you with 3 short takeaways for me, which have been, to add to what has already been said, that I think collaboration is far more important than competition. And this is a demonstration, this program is a demonstration of collaboration to the extent where you don't even know so many people who have been working behind the scenes, some who we will recognize today, and others you will not have met, but they have collaborated and they have worked together. And we owe them a lot of our thanks and gratitude, even though they may not be with us in this room today. So I thank all of our collaborators without naming anyone. The second thing I want to leave you with is to remember that everything that you have learned is connected. अब आपने एक कोर्स लिया है एक डिसिप्लिन में, और उसमें आपने जैसे हम when we peel an onion and then we see another face of it, we smell, we taste, and we keep peeling until we get to the core, which is what you've done with the courses. But each course is connected, and that connection goes way beyond just courses, as you have seen in the field, as it is related to bigger questions that you have raised and heard in some of the speeches today. And really, the education is about finding those nodes of connectors where we can understand things that we didn't understand before. So ye connections ka, I think we don't do as good a job as we can in the university, where we start establishing our own little silos. And while that is important, or depth is very important, but to understand real phenomena, we have to be able to start connecting the dots to say, how is this related to that? How is a disaster related to an opportunity? And in fact, as someone once said, that in fact, there is very little difference between obstacle and opportunity, right? And the wise, of course, are able to turn both to their advantage. So the final thing I would like to leave you with is that there is nothing more important than to thank those who have taken you from point A to point B. And those are the people, as I mentioned, who aren't here, but especially those who are here. And that is what we are going to do for the rest of the program, is to acknowledge and thank the great accomplishments that you had and the many more that you will build upon as a result of this collaboration. So I hope you walk away with a proud feeling of thanking those that supported you in the hardest times that you had, but also in the best of times that you enjoyed. From the cooks and from the cleaners and from those that solved problems, I must say that
Baltistan is a place where everybody learns to improvise. This is a place of improvisation. And improvisation is a special talent that people develop when they face hardships, because if you want to get through, you have to think on your feet and decide at the last minute how you're going to take advantage of what's before you. And this is a lesson we can all learn from our Balti friends and from those who live in the beautiful environments that you do. So with that, I will end my remarks because I know I'm between you and lunch, and there are some more things we'd like to do to recognize people. So I thank you very much for giving me the privilege of being with you when the program started. And I did bring my whole family here. Unfortunately, they couldn't join today. They also are learning that you don't come and just drink tap water, or you don't eat all the foods that look so delicious that your body can't handle. And so they are managing that right now, but inshallah, we plan to stick around for a few more days and learn from the majesty of the surrounding gifts that God has given you and the rest of Pakistan. With that, thank you. Thank you very much. It is my pleasure now to announce 5 postcard winners. Now, there are some wonderful postcards up there. You know that. I haven't had a chance to read all of them, but these are the little treasures that I think we want to keep. And these are the treasures that we will return to as we compare them with the next cohort who will present and build on the work that you have done. So the 5 people who have been selected by a jury who came very early in the morning, we should thank all of them. Oh, okay, 5 have become 7. That's great. All right, more the merrier. I'd like all 7 of you to please come to the stage as I announce your names. And once everyone is here, then we can all applaud them once we give them some special artifacts of recognition, starting with Muhammad Asim, Zarina Batul, Iman Iqbal Khan, Sumaira Wazir, Mohsin Hafiz, Nizar Hussain, Tayyiba Noreen. Everyone, round of applause for all. Now it is my pleasure. Thank you very much. Thank you. Oh, really? Okay. Aha. Okay, my apologies. Who you really want to hear from is not me, but them. So I'm going to invite each of you to come and say a few words about your posters. Why don't we start with postcards? I'm sorry, postcards. So you're the fellow who never got a certificate, but you should get a certificate, and we will be giving you a certificate. Thank you so much. All right, so I wanted to make a postcard to save some memories and experiences, and make it relevant to the course. So here's my postcard, starting from the
chromosomes and then unfolding into the whole journey of this experience. So here is us visiting Chunda Valley and then Mantoga waterfall, and then us, all of us fellows eating the fries from hostel. And then here is a very energetic personality from UOB, Dr. Istiar, leading us in the trip. And then Dr. Tariq leading us in the labs, and Ma'am Hina on, yeah, here is our journey. Thank you. And also a big shout out to Khadija for helping me in pasting all of this stuff. So very I feel the thing which is going to last the longest in my memory are the people of Skardu. Their hospitality, generosity, love, and everything. The girls, let's say, abhi poster nahi hai. The girls you are seeing in the postcard are my birthday friend Samreen and me. And it was the first day we met, and she got her clothes and hands, everything dirty to get me the reddest apple in her shopping garden. And we got so much to share together. We immersed ourselves to experience, we interacted to influence, and we impacted each other to make it memorable. Thank you all my fellows for making this experience very wholesome, for not only for me, but for all of us. Thank you again. Assalamualaikum. So what I did in my poster was कि मैंने कोई 4 कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़े थे क्लास में और फिजिकली जो एक्सपीरियंस किए थे वो ड्रा करने की कोशिश की थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो बताया था कि हाउ वाटर ट्रांसफर्स फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, एंड द सेकंड थिंग वाज दैट what are the some mitigation strategies that can help to save the nature, and the third thing was how some sustainable improve the nature. Thank you. मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जितने भी लम्स और फैकल्टी मेंबर टीचर थे, उन्होंने इतना खूबसूरत मौका हमें दिया लर्निंग के लिए. इस 1 महीने में हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत फ़ायदा हुआ हमें इससे. हम इधर होते हुए भी हमने इतने सारे प्लांट्स ना ही देखे थे और ना ही हमने उनको आइडेंटिफाई किए थे. तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती थी, इसीलिए मैंने टीचरों को शुक्रिया अदा करने के लिए पोस्ट कार्ड भी उसी के मुताबिक बनाया था. तो मैंने ये पोस्ट कार्ड बनाया था. ये एक फूल होता है टीचरों को शुक्रिया करने के लिए. Teacher are like the flowers, they separate their beauty throughout the words. Their love of teaching touches the heart of students, who then carry with them that sense of wonder with them wherever they may go. So I thank all of this. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most Rahman and the Rahim. On the top of my heart, I may pay my Islam to all of you. Assalamu alaikum. सबसे पहले मैं लम्स के स्टूडेंट्स और टीचर्स का बहुत थैंकफुल हूँ, और यूएस की उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि लम्स के स्टूडेंट के साथ हमें पढ़ने का मौका मिला. और मैं हमारा कोर्स ग्रीन एनर्जी और इसी के हवाले से मैंने बनाए थे पोस्ट कार्ड बनाए थे कि हम किस तरह नेचर सोर्सेज को यूज़ करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. और अगेन सबको बहुत बहुत थैंक यू. In my postcard, I don't have it right now, but I've made a timeline of experiences of the beautiful places I visited, what they taught me, what I learned from them, and the challenges I faced. What I learned from them, I've mentioned those at the back side. You're welcome to read all of it. And in the front, Iman helped me with the drawings. So thanks to Iman. And thanks to bio people, they lent me the chart paper, all of it. So thanks to them too. And so in the front there are drawings, the places we visited, like some power plant, Diosai, and I've given us a brief description of those places too. And then there's a windmill in the middle,
which basically reflects the project we've been working on, wind and solar. And I was really obsessed with it, so I attached the windmill too, and this is that. Thank you. Okay, I'm going to get it right this time. So we've had, I believe, close to 40 or 50 posters, 48 posters. So just like we had almost 300 postcards, and very difficult to make these choices of coming up with 7 really outstanding ones. All of them are wonderful. Same story with the posters, but here we have 5 groups representing 5 posters who are going to be called up. So I'm going to call up the group, and then one person from the group will speak briefly about the poster. Thank you. Okay, so starting with the poster related to entrepreneurship, it is the group that includes Abu Bakr, Ghulam Mustafa, Shujat Ali, and Zishan Haidar. Please come to the stage. Assalamualaikum everyone. So basically हमने अपने पोस्टर पे हमारी प्रैक्टिकल लर्निंग शो करने की कोशिश की है. अपन कचूरा जाना, वहाँ पे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाना, डिफिकल्टीज फेस करना, इट वाज अ हेल ऑफ अ जॉब. बट एक चीज मैंने यही सीखी, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क. बाकी एंड में यही कहना चाहूँगा कि बाकी कोर्स के स्टूडेंट्स प्ले विद बुक्स, एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट्स प्ले विद कैश. थैंक यू. As long as you play with your own cash. Thank you for that. Thank you very much. We'll now go to all the groups involved with e-commerce. We have the winning group includes Gohar Ali, Iqbal Hassan, Mohammad Afzal, Fatima Shahbaz, Mohammad Zain Rafiq, and Mohammad Zohaib. Please come to the stage. Assalamualaikum everybody. So this experience has been one of the best experiences of my life because I am a huge fan of traveling, but this experience told me that traveling is not only about sightseeing, it is way more that. For example, we immersed into the culture, into the Balti culture. We had food of the Balti culture, which wasn't easy to eat, but we did that. We interacted with people, went to their homes, we sat with them, listened to the stories, their experiences, and honestly, we learned a lot from that. So I think this experience has taught me a lot, and if possible, I'll try to come again over here or in any other part of the country to immerse in the culture, not only to just visit the place, but to learn from the people and interact with them. Thank you.
Thank you. And now we move to the groups that were involved in green energy. The winning group is Mohammad Huzaifa, Nasir Hussain, Sayyid Ahmad, Mohammad Salman Beg, Hassan Mustafa, and Ali Raza. Also, wow, okay. Ashir, Fayaz Mufti, Manu Fatma, Memona Batul, Nadia Batul. Wow, this is a big group. Assalamualaikum all teachers and students. My name is Mahmoud Fatima and I am student of University of Baltistan. हमारा जो कोर्स है वो है ग्रीन एनर्जी और जिसमें हमारा प्रोजेक्ट है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब हमारे इस प्रोजेक्ट में हमारा जो मेन एम था वो ये था कि हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। जो कचरा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसके बेस पे उस पोटेंशियल को देख के हम अगर क्या यहाँ पे प्लांट लगा सकते हैं या नहीं, ये हमने देखना था। उसके बाद जो हमारे पोस्टर्स हैं उसमें हमने थ्रू आउट जो हमारी जर्नी थी उसी को हमने बताया है, जिसमें हमने फर्स्ट डे से लास्ट डे तक जितना कुछ सीखा है वो सब हमने इसमें शामिल किया। उसके बाद हमारा जो पोस्टर्स है उसमें हमारे पूरे टीम की मेहनत शामिल है, पूरे ग्रुप ने मिल के काम किया। थैंक यू। Thank you very much. And now we have from Life Sciences and Biosciences. The winning group is Anas Naeem, Fazeen Shaukat, Umar Tariq, Sajjad Anwar, Zishan Fareed, Rubab Batul, Sumaira Batul, and Hasina Batul. Okay, so Assalamu alaikum सबको। अच्छा, so when I first enrolled in this course, I had no idea कि क्या होता है फील्डवर्क क्या होगा और क्या करना होगा। तो I just came to Skardu कि क्या होता है, because Skardu आ रहे हैं तो फील्ड ट्रिप से मजा आएगा, बस एंजॉय करेंगे। But when I went to our first field trip as a group now, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने साथ दे डिवाइडेड अस इनटू ग्रुप, तब पता लगा कि एक्चुअली काम भी बहुत ज़्यादा है और बहुत हेक्टिक कोर्स है ये। तो अब उधर लाइक वी वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड वी कलेक्टेड प्लांट्स एंड सर्वेड विलेजेस, ये सब कुछ किया। तो काफ़ी बस वही था हमारे पोस्टर में हमने एक्सप्लेन करना था कि टाइमलाइन थ्रू आउट द कोर्स क्या थी। तो यही फर्स्ट वी वेंट टू चुंदा वैली एंड देन फिर उधर हमने प्लांट ज़्यादा कलेक्ट किए, फिर आगे जो हम सरकार वगैरह गए तो उधर फिर वो बताओ। Or like the best learning experience for us was like the meeting with the locals, right? So वहाँ पे हम लोगों ने सर्वेस वगैरह किए and you know जब हम लोकल से मिले ना
So what we learned from them was that these guys are so contented. Like हम लोगों ने जब सर्वेस किए ना, तो most of them have an average income of like 18,000 to $20,000, 20,000 rupees. So most of them were earning from like 18,000 rupees to 20,000 rupees, and you know, these guys were allegedly so contented, so like happy with their lives. Like मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि यार हम लोग लाहौर में like जो भी कमा रहे हैं, but at the same time these guys are much more happier than us. तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था. Secondly, obviously like हम लोगों ने जो plants वगैरह collect किए, so like this is the like second. This is a catalog we have made, and it contains like 92 different species of plants, and we have so thank you. So like it contains like all the information, like genus of the plant, scientific name, description, where we found that plant, its altitude. So like it was really hectic, and like it was never possible without the help of our TAs. Special thanks to Ahmed Bhai, special thanks to Salman, special thanks to Miss Hina, Miss Shehnaz, Miss Afifa, and obviously special thanks to our instructors, Sir Tariq, Sir Amir Faisal, Sir Ishtaq, and Sir Naseem. A huge round of applause for all of our instructors. And also, I would like to share a poetry and offered shares है, ठीक है, for the future of this Baltistan experience. पहुंच जाएंगे हम भी इंतहा को गालिब, पहुंच जाएंगे हम भी इंतहा को गालिब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. Thank you very much. Thank you all. Last but not least, from the Water Resources Management groups, the winning group includes Rehan Chaudhary, Mohammad Halim, Mamoona Khan, and Sayyid Zaid. अस्सलाम वालेकुम. 13 अगस्त को हम स्कर्दू तो पहुंच गए, लेकिन इधर पहुंच के पता लगा कि कोर्सेज में, और 13 जुलाई को हम स्कर्दू तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ पहुंच के पता लगा कि कोर्सेज में तो प्रोजेक्ट्स भी होंगे और काम भी करना पड़ेगा. तो इधर बहुत से फील्ड ट्रिप्स हुए जहाँ पे हम सुबह सुबह निकलते थे और शाम को लेट थक खा के वापस आते थे. उन्हीं में से एक फील्ड ट्रिप था जो कि शिगर का था, जहाँ पे जाके हमें मालूम हुआ कि इधर जो खाद है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो सिर्फ 2 साल पहले से शुरू हुए हैं. तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा प्रोजेक्ट करें जिसमें इन्हें बताएं कि हम अपने पंजाब, सिंध, केपी के, बलोचिस्तान की जमीनों को तबाह कर चुके हैं. अगर आप बचा सकते हैं तो बचा लें. और आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे इंस्ट्रक्टर्स का, जो कि मेरे ख्याल से हमारे बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स थे, सर अबू बकर, मैम फौजिया एंड मैम जुवेरिया. और उसके बाद द वेरी बेस्ट टीए व्हिच वी कुड हैव गेट इन स्कर्दू वाज समर. थैंक यू एवरीवन, एंड नाउ साइनिंग ऑफ. Could I invite you, Dr. Mateen, to join me on stage? Just before we recognize some other distinguished people in the room, I do want to say that, I mentioned to you before that I've had the, privilege of having just a little bit to do with this program. But I have to tell you, compared to other experiential programs around the world, you should be really proud of the learning that you have displayed today and of course throughout the month.
And remember that this learning is infectious. It has to be passed on to others. So the journey, as the video showed, does not end, but it only is a beginning here. As we recognize our students, and this whole occasion is about students, we want to elevate this and spread the good word, not just within Pakistan, but beyond Pakistan. This is a program that the whole world needs to know about, and the whole world must learn to participate as you are showing them all the benefits that you take away with you. So please spread the word around. Thank you for that. Dr. Mateen Saab, we are going to recognize exemplary contributions that have been made throughout the many months of this program. Some names have been mentioned, some have not. So I'm just going to call on some names, and if you can present some certificates to them, that would be an honor. Thank you. So I will begin with Mr. Iqbal Shehzad, Regional Director, AIOU, who we owe a lot of thanks to. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लम्स यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान का। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, वरना ये मुनासिब तो नहीं था कि वाइस चांसलर साहब के उसके बाद ये बात करूँ। मैंने कहा आपके सामने मैं अपनी एक छोटी सी गुजारिश रख लूँ। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो वाइस चांसलर साहब आए थे, तशरीफ लाए थे वहाँ, तो जो भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़ थी वो हमने कहा था कि आपके लिए हाजिर हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि उसमें हम किसी हद तक वो हुए। लेकिन हॉस्टल वगैरह का भी हमारा था, वो भी हमारी तरफ से थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने बेहतर समझा कि कुछ होटल्स जो है उनको एंगेज किया जाए, तो नेक्स्ट टाइम उसमें भी इंशाल्लाह हम फर्दर इम्प्रूवमेंट लाएंगे और कोई प्रोग्राम बनता है तो वो तमाम फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह हॉस्टल की भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। तो एक बात हमारी चली थी कि ये सब जो भी फैसिलिटीज़ है तो स्टूडेंट्स के लिए, तो लम्स यूनिवर्सिटी से आपकी कोई गुजारिश है, कोई चीज़ है, कोई पैसे मांगना है, कोई और चीज़ है, तो उस वक्त हमारे स्टाफ की एक बात हुई थी और मैंने अपने हायर से भी शेयर किया था कि एक गुजारिश हम इनसे ज़रूर करेंगे कि जो लम्स में मुख्तलिफ नाम उनसे कोई पैसे मांगेंगे न कुछ, इवन हॉस्टल भी हमने कहा था कि कुछ हमने नहीं मांगना, सिर्फ एक चीज़ वो है ट्रेनिंग्स के हवाले से। तो हमारे 51 कैंपसेस हैं पूरे पाकिस्तान में, और स्पेशली हमारा जो कैंपस में हम जो स्टाफ हैं ट्रेनिंग्स के हवाले से हम आपकी तरफ देख रहे होते हैं। तो अगर मुनासिब समझे और ये पॉसिबल है तो हमें भी किसी भी ट्रेनिंग में जो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, फैकल्टी के हवाले से कोई ट्रेनिंग है तो हमें ज़रूर उसमें शामिल किया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपकी टीम का, बट ऑल्सो द वाइस चांसलर डॉक्टर जियाउल नईम। उन्होंने बहुत दिल खोल के हमारे साथ बातें की हैं कि सिर्फ ये प्रोजेक्ट के अलावा और भी ऑनलाइन लर्निंग पे कोलैबोरेशन ज़रूर होगा लम्स के साथ, और बाकी 6-7 और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एसिंक्रोनस कोर्सेज बना रही हैं अभी। So inshallah, we'll make that available to the rest of Pakistan as well. And that is another collaboration we look forward to. Thank you. May I now invite our elder, our Buzurg, Mr. Yusuf Hussain Abadi, Tamgai Imtiaz, author of the History of Baltistan, had a translation for the Quran in the Balti language, author of many, many books. Please come and join us, please.
May I invite Mr. Hassan Hasrat Tamga Imtiaz, author of many books, drama writer, historian, editor, scholar, has served as a regional deputy director and director نہیں آئے اچھا خیر پھر بھی ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. مسٹر احسان علی دانش نہیں ہیں. Our apologies. We were rightly told کہ یہ جو I mentioned that they were awarded Tamgai Imtiaz. That's not correct. That's the smallest award. What they have actually received is the Pride of Performance, which is a much, much more esteemed award. Our apologies for that. Okay, Mr. Ehsan Ali Danish, author of many books, poet, radio artist, translator, and drama writer. ڈاکٹر اشتیاق صاحب السلام علیکم سب کا آپ سب کا. پھولوں کے حوالے سے بڑی باتیں ہو گئی پھول اور ڈاکٹر صاحب خاص کر پھول کا جب ذکر کر رہے تھے مجھے تو وہ کسی کا شعر یاد آ رہا تھا کہ ڈاکٹر اشتیاق کے نام کر رہا ہوں پھول لے کر پھول آیا پھول کر میں نے کہا پھول کیوں لائے ہو صاحب جب کہ خود تم پھول ہو. اور شعر ایسا انہوں نے کہا وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا یہ ایکسپرٹ نہیں ہے بہت بڑا ایکسپرٹ ہے. میں آپ کو علامہ اقبال کی زمین میں ایک شعر سنانے کے لیے 2 شعر کا میں سہارا لے رہا ہوں. میں نے یہ بہت پہلے کی لکھی نظم ہے اور 14 اگست بھی ہے آج یہ شعر سنائے 14 اگست کے نام سے میں سنا رہا ہوں کہ یہ ہے کہ کدھر ہے یقیناً کوئی سمجھوتا ہوا ہوگا کمینوں میں. اقبال کی زمین میں کہہ رہا ہوں یقیناً کوئی سمجھوتا ہوا ہوگا کمینوں میں کہ اچھے لوگ اب ملتے نہیں سالوں مہینوں میں کہ اچھے لوگ اب ملتے نہیں سالوں مہینوں میں. اور خدا نے روح اپنی پھونک دی انسان خاکی میں خدا نے روح اپنی پھونک دی انسان خاکی میں اسی انسان نے پھر روح پھونکی ہے مشینوں میں اسی انسان نے پھر روح پھونکی ہے مشینوں میں. اور یہ شعر آپ کے بس یہ شعر سنانے کے لیے میں نے 2 شعر کا سہارا دیا کہ تمہارا ہنستا کھلتا شوخ چہرہ یاد آئے گا تمہارا ہنستا کھلتا شوخ چہرہ یاد آئے گا یہاں اسکردو کی ہر وادی میں پھولوں کے مہینوں میں اسکردو کے ہر وادی میں پھولوں کے مہینوں میں. اور کسی اور نظم سے 2 شعر کہ کبھی نرگس تیری آنکھوں سے پیاری ہو نہیں سکتی کبھی نرگس تیری آنکھوں سے پیاری ہو نہیں سکتی خدا شاہد نظر ناقص ہماری ہو نہیں سکتی خدا شاہد نظر ناقص ہماری ہو نہیں سکتی. یہ وجہ دوریاں جو درمیان میں اپنے حائل ہے یہ وجہ دوریاں جو درمیان میں اپنے حائل ہے ہماری ہو تو سکتی ہے تمہاری ہو نہیں سکتی ہماری ہو تو سکتی ہے تمہاری ہو نہیں سکتی. اور یہ مجبوری ہے اس کی اس لیے وہ جھک کے ملتا ہے یہ مجبوری ہے اس کی اس لیے وہ جھک کے ملتا ہے. یہ بیماری کمر کی انکساری ہو نہیں سکتی یہ بیماری کمر کی انکساری ہو نہیں سکتی. اور آخری یہ 3 شعر سنا کر اجازت چاہوں گا بہت اسپیڈ میں جا رہا ہوں. آنکھ سے بے بس کی جب اشکوں کے تارے گر گئے کیونکہ انہوں نے جانا ہے لاہور پتہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں آئندہ پھر ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی کیا پتہ لہٰذا میں شعر سنا کے چلتا ہوں. آنکھ سے بے بس کی جب اشکوں کے تارے گر گئے رن میں دشمن خود ہی اپنے آپ ہارے گر گئے رن میں دشمن خود ہی اپنے آپ ہارے گر گئے. دفعتاً اپنی نظر شاید گری تھی اس لیے دفعتاً اپنی نظر شاید گری تھی اس لیے یوں لگا جیسے نظر سے سب نظارے گر گئے یوں لگا جیسے نظر سے سب نظارے گر گئے. اور اپنے ایک معیار سے نیچے نہیں گرتے ہیں ہم اپنے ایک معیار سے نیچے نہیں گرتے ہیں ہم ورنہ ان قدموں میں کتنے ماہ پارے گر گئے ورنہ ان کے قدموں میں کتنے ماہ پارے گر گئے. اور یاد رکھے کون دانش گردش ایام کی یاد رکھے کون دانش گردش ایام کی آسمان سے ٹوٹ کر کتنے ستارے گر گئے. السلام علیکم.
शुक्रिया आपका बहुत. It's my pleasure to invite Mr. Qasim Naseem, Goodwill Ambassador, UOBS. Okay. Mr. Nazir Ahmed, Member Senate, UOBS. Then Mr. Ibrahim Shah, Assistant Commissioner, Skardu. नेक्स्ट इज फॉर डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू जो राकेश साहब रिसीव कर रहे हैं जी. ओके. Okay, very good. Mr. Rao Rafe, AC to the Commissioner. Nahin? I think बुलाया इसलिए आपको शायद बोलना है. Thank you so much, everyone. I'm really honored to be here on behalf of the Divisional Administration Skardu. Commissioner Sir wasn't here; he couldn't make it because he had a commitment. But on behalf of the Divisional Administration, I thank you all for coming, and we'll be happy to host you again in Baltistan, inshallah. Thank you so much. थैंक यू सो मच. उसके बाद जनाब हाजी फिदा मोहम्मद नाशाद लोकल डिग्नेटरी भी हैं, स्कॉलर भी हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान का फर्स्ट चार्टर ड्राफ्ट भी उन्होंने लिखा है. एंड उसके बहुत सारी कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे कनेक्शन में हैं. बहुत सारे हमारे बच्चे जो शतुन नाला डाइवर्जन की बात कर रहे हैं, ही इज़ द वन ऑफ द रिसोर्स पर्सन. आई वुड सजेस्ट जो उनसे मिलना चाहें तो इंशाल्लाह. शायद वो अपनी मुहर्रम की मसरूफियात की वजह से नहीं आए. May I request Janab Yusuf Hussain Abadi Saab to receive his certificate from Honorable Vice Chancellor. Okay, I've been waiting for this part for some time also. It's really my honor and pleasure now to award exemplary contributions made by faculty members. And I will begin with LUMS faculty, starting from Dr. Mohammad Tariq. Dr. Amir Faisal. Dr. Naveed Arshad. Professor Noman Zafar.
Dr. Abu Bakr Mohammed. This is also on behalf of Fawzia and Javeria. Dr. Fawzia, Dr. Javeria, the same contribution as Now, I'd like to invite Dr. Tariq Jadoon to please come to the stage to present some exemplary contributions. All right. Sorry, this is a bit confusing. We're not through with LUMS yet. Okay, so let me start with Dr. Adnan Zahid, who can present. Okay, thank you. All right, Mr. Aman Abed. And last but not least, Dr. Sulaiman Shahid. Although we do not have Dr. Zainul Abidin Khwaja with us and Dr. Jawaria Shfaq, as well as Dr. Fawzia, we do want to acknowledge them. They played a very vital role in creating this person. Thank you very much, Dr. Mateen. Dr. Jadoon, please आ जाएं. And अभी वो वापस जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर मतीन आप फिर आ जाएं वापस. We want to acknowledge you. Dr. Ishtiyaq Hussain Mahmood. Dr. Shafqat Hussain. Dr. Zakir Hussain Kamar. Zakir Saab, sorry. Dr. Salar Ali. Dr. Wajid Hussain.
Dr. Zakir Hussain Zakar. Zakir. Dr. Zahir Hussain. Zahirullah Hussain. Mr. Dostar Hussain. And now the moment you've all been waiting for, we are going to recognize our teaching assistants. So with your permission, I'm going to call all of the teaching assistants up at once. So please, you hear your name, keep coming up, and we will keep giving you one after another, but just come up till here, and we want to call your name twice. So once I will call them all at once. Once you're here, then we will call you up on stage. Ahmad Hassan Abro. Salman Khwaja. Hina Ahmad. Afifa Kamal. Sayyida Shahnaz. Faryal Ahmad. Samar Farooq. Muhammad Sohail. Muhammad Ashar Ayaz. Umar Habib. Hassan Faraj Gondal. Fiza Ayub. Wasim Akram. Jamshed Ali. Naseem Sheikh. And Hassan Fatih. Okay, we will begin with Ahmad Hassan Abro. Salman Khwaja. Hina Ahmad. Afifa Kamal. Sayyida Shahnaz. Faryal Ahmad. Samar Farooq. Muhammad Sohail.
Muhammad Ashar Ayyar. Umar Habib. Ehsan Faraz, Congress. Okay. Fiza, are you? Wasim Akram. Jamshed Ali. Naseem Sheikh. Here. Hassan Fatmi. Guys, now it's time to recognize our host, the guy who has been looking into our issues all the time. Team Rawa, Hassam Shah and Osama Sawani. We also have somebody who has been looking into the staff issues. Staff के ड्राइवर भी हैं, staff को क्या क्या वो नहीं है, जहाज उठाना है, खाना पिलाना है, क्या करना है. हमारे बशीर साहब ब्रांड साइन वाले जो हैं. Although he's also faculty at UOBS, but the way he has been a host to us, it's exemplary. Okay, we missed somebody. So from teaching assistant, Naseem Sher Saab, Naseem Sher. Yeah. He's a PF bio. Thank you so much. Now, may I request UBS staff, and they will come here. I will call their names. So please come here and receive their certificates for award of exemplary service for this joint summer school program. Mr. Wasimullah Jan Malik, Registrar, University of Baltistan. Anyone who wants to receive from his behalf? Dr. Haji Kareem, Controller Exams, University of Baltistan.
Mr. Yunus Jatawi, Treasurer, University of Baltistan. Mr. Musa Ali, Deputy Registrar, University of Baltistan. Mr. Javed Hussain, Deputy Registrar and his IT team, University of Baltistan. Mr. Khalid Mahmood, Assistant Registrar, University of Baltistan. Mr. Ghulam Nabi, Assistant Treasurer, University of Baltistan. Mr. Zahid Abbas, Land Technician, University of Baltistan. Mr. Zahid Abbas. Mr. Imtiaz Hussain, Photographer, University of Baltistan. Mr. Zahid Abbas. Mr. Imtiaz Hussain, photographer. And media person. Mr. Mohammad Zakir, Transport in Charge, University of Baltistan. Mr. Shujad Ali, driver. Shujad Hussain. Shujad Hussain. अगर आवाज आ रही है बाहर है तो आ जाएं. Mr. Ghulam Raza, driver. Mr. Muhammad Iqbal, driver. आप लोग प्लीज सिटी से इज्तिनाब करें, मुहर्रम है, तालियां जरूर बजाएं, लेकिन सिटी प्लीज शायद वो बस ज्यादा तेज चला रहे हैं. मिस्टर शुजात, अगर आप करीब में हैं तो आ जाएं. मिस्टर गुलाम रसूल, शुजात, मिस्टर शुजात. Mr. Ghulam Rasool, driver. Driver Ghulam Rasool. Mr. Ghulam Rasool. Mr. Muhammad Aslam. Mr. Muhammad Aslam. Now, I would like to request staff for exemplary service awards from
LUMS. It starts from Miss Sadia Manzoor, housing team with Miss Sadia Manzoor. And she was here with her 2 kids, and that was really tough. So thank you, Ma'am Sadia, for being here. Miss Sophia Mubarak, girls housing. Mr. Muhammad Mudassir, male housing officer. He is the one who enforced curfew. This guy. 12 बजे वाला कर्फ्यू इन्होंने लगाया, हमने लगाया. Mr. Muhammad Ali, male housing officer. Curfew. Again, 12 बजे वाला कर्फ्यू याद रखना गाइस. Mr. Furman Ali, classroom officer. Furman, classroom in charge. Mr. Muhammad Ejaz Awan, PGC food service supervisor. Ejaz साहब के बगैर आपका खाना नहीं बन सकता था. Ejaz साहब, deserve a second round of applause. PGC में हमने भी बहुत टेस्टी खाने खाए हैं. He had diabetes and then he traveled with you guys. Brilliant. Mr. Manzoor Masih. Manzoor साहब. Mr. Khalid Anwar Cook. Khalid Anwar. जिन लोगों ने आपकी कहानियां आगे फैलानी है तो वो स्टार्ट हो रहे हैं. समीन मोहसिन, कॉम्स. अनम कमरान भट्टी, कॉम्स टीम. फरवा बतूल, कॉम्स टीम. Muhammad Ali, the media guy, the video guy. Mr. Ali Naqvi. Harfan Mola. Mr. Ali Naqvi. Learning Institute. अब वो शख्स है जिसने सबसे ज्यादा काम किया है, अयूब. Hold on, please. Okay. And Hataf के लिए special letter of appreciation and one-time honorarium from LUMS.
अब सबसे अब वो शख्स जिसने अदब से ज्यादा काम किया है। अमर बरार। Including this special gift, letter of appreciation and one-time honorarium. अब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं और माशाल्लाह ऑलमोस्ट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सब्र किया और मैं साथ साथ बताता चलूँ इन पहाड़ी सिलसिलों में जहाँ हम रह रहे हैं पिछले कोई 74 ईयर्स से जश्न आज़ादी मना रहे हैं। पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए ये 75th है। मैं यहाँ बताता चलूँ 1947 के बाद गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ और हमने पहली जश्न आज़ादी 1948 में मनाई। यूँ हमारा ये 74 जश्न आज़ादी है। मुहर्रम की वजह से हम इस पूरे सेशन को बहुत ही मुख्तसर कर रहे हैं, यानी 14 अगस्त की भी कुछ हमारे जो ख्यालात हैं दिल से दिल मिलने वाली बात है कि अगर आप देखें पाकिस्तान के अदर सूबों की तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की धड़कनें भी साथ चलती हैं। हमारी आवाज़, हमारी हिम्मत, हमारा जोश, जज्बा और मुल्क के साथ जो हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो पूरे पाकिस्तान के कौम के साथ हैं। जश्न आज़ादी आप सबको मुबारक हो। हमारी पूरी टीम लम्स की जो स्टूडेंट्स हैं वो आज आखिरी दिन यहाँ पे हैं। उसके बाद डिनर यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तमाम स्टूडेंट और लम्स के मैनेजमेंट के लिए है और कल इंशाल्लाह वो यहाँ से लाहौर की तरफ रखते सफ़र करेंगे। आखिर में ग्रुप फोटो से पहले मैं एक नारा लगाऊं, पाकिस्तान पाकिस्तान, इससे ऊंचा होना चाहिए, पाकिस्तान। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूं, वाइस चांसलर बिफोर फोटो सेशन एक पॉइंट मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ। ग्रुप फोटो सेशन से पहले हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की तरफ से लम्स के मेहमानों के लिए कुछ शील्ड्स भी हैं। शील्ड से पहले डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर जाकिर हुसैन जाकिर अपने पब्लिकेशन का एक सेट ऑनरेबल वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर अरशद साहब को पेश करेंगे। मैं आई रिक्वेस्ट डॉक्टर जाकिर टू प्रेजेंट हिज बुक्स टू डॉक्टर अरशद, वाइस चांसलर लम्स यूनिवर्सिटी। डॉक्टर मैं जनाब डॉक्टर अब्दुल मतीन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब यहाँ तशरीफ रखें। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की तरफ से लम्स के वाइस चांसलर को सवेनियर पेश करें। बिल्कुल ही नामुमकिन था, इन्होंने अच्छा सा एनवायरनमेंट हमारे स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग का दिया। तो सर आप खड़े ही रहें, आखिरी जहमत हम तमाम करेंगे। तमाम लम्स के और यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के फैकल्टी एंड मैनेजमेंट यहाँ तशरीफ ले आए ग्रुप फोटो के लिए, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स के साथ कर लेंगे ग्रुप फोटो और उसके बाद and after that, after a group photo, we have a surprise for students.
Okay. Video made by scribes. This video made by students for students. Okay? Don't leave. And after the video, we'll have writing. Thank you so much. There is another surprise. जी guys थोड़ा सा पहले कर ले फिर अब देख लें आजा 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 जी भाई आप ही आते हैं बस आते क्या वो बंदा अगर उनका मेकअप आपको बना के ले लें माशाल्लाह अरे भाई डाले यार वहाँ से फॉन्ट वाली सब खींचे मिल के ऑर्डर किया Peace.
That's all. ये क्या चल यार